So good morning friends, welcome to PD classes. Today an important session for those who are preparing for RIMC interview, and I hope today's session is going to be very fruitful, and at the last of this intro I'll give you a very dynamic tip. That tip will help you in interviews of RIMC. So first of all I welcome you. How are you Tanuj? कैसे हैं आप? I am fine sir. Okay. So Mr. Tanuj, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, you are coming in RIMC. You tell me, RIMC founded on 13 March 1922. Very good. RIMC की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज. Okay. Recognized by which board? CBSE. Okay. And what is the motto of RIMC? बाल विवेक means strength and wisdom. Very good. It signifies the importance of both physical and mental fortitude in leadership and services. Why do you want to come in RIMC? क्यों आना चाहते हैं आप? I want to come in RMC because it emits my dream to become an Air Chief Marshal. Very good यार. एयर चीफ मार्शल. Yes sir. चलिए फिर ये बताइए, ये एयरफोर्स के चीफ कौन है? Air Chief Marshal AP Singh. वेरी गुड. और कितनी कमांड्स होती है एयरफोर्स में? 7. और आर्मी में? 7. वेरी गुड. एयरफोर्स फाउंडेशन कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर 1932. ओके. अच्छा भाई, अब आप हमें ये बताइए, व्हाट इज द मोटो ऑफ एयरफोर्स? नभेस पार्सम दीप्तम means touch the sky with the glory. वेरी गुड. एयरफोर्स कमांड्स बताइए. Eastern Command in Shillong, Central Command in Allahabad, Prayagraj, Western Command in New Delhi, Southern Command in Thiruvananthapuram, Training Command in Bangalore, यस. और Maintenance Command in Nagpur, Southern Western Command in Gandhinagar. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अच्छा, आप मुझे एयरफोर्स रैंक्स भी बताइए. Air Chief Marshal, Air Marshal, Air Vice Marshal, Air Commodore, Group Captain, Wing Commander, Squadron Leader, Flight Lieutenant, Flying Officer. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आपके फेवरेट टीचर कौन है? Bittu sir and Raghuveer Singh sir. अरे वाह भाई, क्या बात है. और उनके कारण ही आप पास सेलेक्ट हुए हो. Yes sir. तो वी शुड बी प्राउड ऑफ सच पर्सनालिटीज. उनकी एकेडमी को भी बेस्ट विशेस, राइट? चलिए, बहुत बढ़िया भाई, जिन्होंने बच्चे को RIMC तक लेकर आए, तो डेफिनेटली ये एकेडमी बहुत अच्छी है. अब आप हमें ये बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स? My strengths are that I am self-confident, punctual, and I am an honest boy. वेरी गुड. यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन. Yes sir. ओके. अच्छा भाई, अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे रिलेटेड, तो आप रेडी हैं उसके लिए? Okay sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है. गुड. Thank you sir. मिस्टर तनुज, I want to give chance to Vanda madam. Vanda madam, you can ask questions please. Mr. Tanuj, tell about your hobbies. My hobbies are to play cricket, running, and to play kabaddi. Very good, बहुत अच्छा. कोई फेवरेट प्लेयर आपका? Virat Kohli. Why Virat Kohli is your favorite? It shot in a different way, Okay. and his style was amazing. Style is amazing. Yes sir. Okay. और जो खेलने का वे है वो आपको अच्छा लगता है? Yes. Okay, okay. Tanuj means what? Son of the joy. My name matches the personality as I am a jovial and helpful person. Okay. Okay, right now you are in 7th standard. Yes sir. So tell some of your achievements of life. I always come first in my class. I won a silver medal in drawing competition. I won a gold in subject competitions by Mac Vision School. Okay. What is your father? My father is a farmer. Okay. And now you tell me, like, you want to be a air chief marshal, right? Yes sir. Okay. So what is your favorite color? आपका favorite color क्या है? Blue. Blue. Okay. And now you tell me, what is your favorite subject? Maths. Maths is your favorite. Yes sir. चलिए, tell me two qualities of your mother. She is very kind about her children, Okay. and she behave very kindly with us. Okay. Okay, you stated about your strengths, like you are a punctual boy. Yes sir. What is the spelling of punctual? PUNCTUAL. And what is the spelling of lieutenant? LIEUTENANT. Okay, that's very good. What is the spelling of commodore? COMMODORE. Shabash, very good. चलिए, now you tell me, like, in your hobbies you stated you like
लाइक यू लाइक गेम्स, राइट? आउटडोर sir. गेम्स। कोई इंडोर गेम आपको अच्छा लगता हो? सर कैरम, चेस। चेस खेलते हैं आप? यस सर। वेरी गुड। और कैरम भी खेलते हैं? यस सर। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। ओके मिस्टर तनुज, नाउ गिविंग चांस टू वंदना मैडम। वंदना मैडम प्लीज। तनुज, a plus b plus c का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट ओपन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट क्लोज। वेरी गुड। चलिए, यू बिलोंग टू विच प्लेस? I belong to Rewari, which is also known as the land of the braves. Land of Braves. Why it is called the Land of Braves? It known as land of the braves because there is a soldier from every home of Rewari. Oh, from every home. Yes. Mr. Tanuj, tell about photosynthesis. When plant takes sunlight from the sun and make food is called photosynthesis. What is spelling of tuition? Spelling of Tuition. 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 Very good here. And what is spelling of committee? Commitee. Very good. Shabash. Very good. Chaliye, Mr. Tanuj, you are coming in RIMC. So, your aim is to become an Air Chief Marshal. Yes, sir. So, according to you, what should be the qualities in Air Chief Marshal? He is responsible Okay. for all staff of Air Force. Okay. He is the biggest, it is the biggest rank in the Air Force that all the burden and work comes on it. Okay. So, you said burden or you said challenge? Challenge. Challenge. Right? So, you are a challenging person? Yes, sir. You love competition? Yes, sir. Okay, that's good. We need such a person only. Okay, you stated very well about the Air Force because you have regard towards Air Force and your ultimate aim is to come in Air Force, right? Yes, sir. What do you know about Navy? Navy में command कितने होते हैं? 4. No. In Navy there are 3 commands. Now I'm giving next chance to Vandana madam. Vandana madam, you can ask questions. Who is the Prime Minister of India Mr. Narendra Modi. and President? Draupadi Murmu. Mr. Tanuj, Yes. what is your favorite place? Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is your favorite. Yes, sir. So वहाँ पर आपने क्या क्या देखा? आप गए हो वहाँ पर? Yes, sir. क्या क्या देखा आपने? Sir, Indian-Pakistan border. Okay. I see tall mountains and ice. Oh, all these things you have seen. Yes, sir. That's wonderful. Yeah. And Vaishno Devi temple. That's great. Who is your favorite hero? Akshay Kumar. Akshay Kumar. Why he is your favorite? He is very confident and acts very stylish in Oh, stylish really? way. Stylish way. चलिए, ये बहुत अच्छी लगा मुझे. You like styles? Yes, sir. Okay. चलिए, आपके बोलने का ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे. How you felt with us? कैसा लगा आपको PD क्लासेस पर? Sir, very well. Okay. पर आज तो आपका फर्स्ट डे है यार. अभी बहुत कुछ बाकी है, आप पे पता है. बहुत चीज़ें बाकी है अभी. बट वन डे के अंदर आपने इतनी जल्दी सीखा, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. राइट? Thank you, sir. ओके. अभी आप मॉर्निंग में आए थे, थोड़े ही घंटे पूरे हुए हैं, बट उसके अंदर जो प्रोग्रेस मैं देख रहा हूँ उससे मैं बहुत खुश हूँ. Thank ओके, you, sir. वेरी गुड. चलिए, समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी हेल्प करने के जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं. दोस्तों, इफ यू आर स्टडीड विद अस अप टू लास्ट, then definitely the tip which I am giving you will definitely be fruitful to you. The very first tip is that whenever you are going for interview, the very important thing you must keep in your mind is your body language. Because whenever you are going out of 100 marks, 55% marks you will be giving with your body language only. So whenever you will go there, you will find a panel of persons, interviewers will be in front of you. So your wishing should not be the separate wishing. आप separate wishing नहीं करेंगे. It's not that you will wish good morning sir, good morning madam, good morning sir, not like this. Your wishing should be good morning sir, good morning madam. That is enough. Instead of wishing like separately, this is the best way. And now suppose all are sir, then definitely your wishing would be good morning sir. Now it depends also. अगर वहाँ पर समय हुआ है 11:45 to 12:15 यानी 11:15 से 12:15 के बीच के टाइम है, तो आप बोलेंगे गुड नून सर या गुड नून सर, गुड नून मैडम. और यदि समय हुआ है 12:30 12:15 के आगे का, तो ऑब्वियस है गुड आफ्टरनून. 4 o'clock के बाद का गुड इवनिंग सर, और मॉर्निंग आवर्स में गुड मॉर्निंग सर. तो आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे. अब मान लीजिए कभी कभी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला था नेवी में कमांड्स कितने, आपने कहा सर 4, मैंने कहा नहीं 3 होती है. राइट? तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो डजंट मैटर. मतलब आपने बोलना है सॉरी सर, एट प्रेजेंट आई एम अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. सॉरी सर, राइट नाउ आई एम अनेबल टू रिकॉल द आंसर. आप इस तरीके से जवाब देंगे. तो होप whatever tip I have given you, you will implement it, and I want everybody should get selected in RIMC. और proud of you कि आपने एग्जाम पास आउट किया. ओके, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू.